Assalamu alaikum, my dear learners. In our today's class, we are going to focus on section B of Pearson Edexcel Geography. So the topic which we are going to discuss, the name of the topic is globalization. Now, what is globalization and how this topic can come in your Pearson Edexcel exam? This is the thing you have to focus on. First of all, you need to understand the meaning of globalization. Then what is globalization? Globalization कहते किसको है? एक्चुअली बेसिकली बेटे चाहे आप ग्लोबलाइजेशन बोलो या आप ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस की बात करो, ग्लोबलाइजेशन है या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस है, दोनों का मतलब ये है कि आपके पास जो हेड हेड है, यानी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसका हेड ऑफिस, लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ यूनिलीवर, that its head office is in another country and its branches are in different parts of the world. Are you getting it? So ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक मेन इंडस्ट्री हो जो कि एक कंट्री के अंदर मौजूद हो और उसकी ब्रांचेस जो हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जो सेंटर कंपनी आप समझ लो, जो मेन इंडस्ट्री होती है या जो मेन कंपनी होती है वो डेवलप कंट्रीज में होती है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर पाई जाती हैं, right? Like for example, I want to give you a very small example. Like for example, I have a business, right? And I made some products, like I make jams and marmalades, for example. यानी मैं jams का business है कि मैं fruits को जो है use करके उनको jams में convert करती हूँ, right? तो बेसिकली मेरी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर और मैं उसकी ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड खोलती हूँ. इसको कहते हैं बेटे ग्लोबलाइजेशन. नाउ वी आर गोइंग टू नाउ एनालाइज कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है. देखो, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट पियर्सन एंड एक्सेल वांट टू नो कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है और ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है. तो जब इसकी बात करते हैं, सो माय डियर लर्नर्स, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली आपके पास होस्ट कंट्री कौन सी कंट्री होती है जहां जाकर हमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है. सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर लर्नर्स, कोई भी कंट्री हो उसके लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब ये कह सकते हो कि उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट इज ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. तो अगर बेसिकली वो अपनी कंपनी या अपनी इंडस्ट्री किसी और मुल्क में जाकर खोलता है तो उसको इंटरेस्ट क्या होगा, उसको फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल लुक फॉर द चीपर लेबर. लाइक अगर मैं अपनी कंपनी किसी और कंट्री के अंदर खोल रही हूँ, so my focus and my emphasis will be that will I get the cheap labor, will I get the more profit? Are you getting my point? Will I get more business exposure? All right. सो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई मुल्क आपकी कंट्री में आकर आपके लिए कंपनी खोल रहा है तो उसके लिए अपना इंटरेस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है. देखो, बहुत सारी कंपनीज हैं, यूनिलीवर है, टोयोटा है, कैलटेक्स है. ये सारी कंपनीज कौन सी कंपनीज है? क्या ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज है? नो, दे आर नॉट पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज. इनके जो हेडक्वार्टर्स है या इनका जो सेंटर इंडस्ट्री है वो किसी और मुल्क में है और इसकी ब्रांचेस दे हैव ओपनड इन पाकिस्तान. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड कि ये जो आने वाली कंपनीज होती हैं, दे आर डूइंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर, यानी वो लेबर से बहुत काम लेती हैं लेकिन उनको सैलरीज उनके काम के अकॉर्डिंग नहीं देती. ये भी देखा गया है कि ये आने वाली इंडस्ट्रीज जो होती हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट. वो इन्वायरमेंट का इतना ख्याल नहीं रखती. लाइक दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि पोल्यूशन हो रही है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So now I'm going to share my notes of globalization with you because this is the topic of section B and you need to do it for your 8-mark question and for your 6-mark question. This topic is very, very important for your geography paper section B. So now I'm sharing the notes with you after giving you the introduction. We are going to talk about geography section B. Topic is globalization.
Okay. Now, after the introduction, we will directly jump to our topic. I'm just scrolling it down so that we can reach to our topic, globalization. So remember the definition of globalization, that globalization means that you have a main company or the central company or the central organization in one part of the world, and you have branches in other parts of the world, and main focus and emphasis is to increase the business. All right, now we are coming to our topic. Okay, this is the topic for today, globalization. See, globalization is the process by which businesses or other organizations develop international influence, right? What is globalization? Globalization is a process जिसकी मदद से जो businesses हैं या organizations हैं या companies हैं या factories हैं वो अपना international influence establish करती हैं by opening their branches in other parts of the world on the international scale. So this is globalization. Now it has certain advantages and certain disadvantages. We are going to also read from over here as well. Multinational or transnational companies are ones which locate their factories throughout the world. This gives them many benefits such as access to the world market. अब ऑब्वियसली बात है बेटी कि अपनी खोलकर अपनी कंपनी किसी और जगह खोलकर या अपनी ब्रांच किसी और जगह खोलकर क्या फायदा होता है. माय डियर लर्नर्स, आप देखो इस चीज को ऐसे समझो, जब कोई बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है तो उसकी ब्रांचेस खुलती हैं. लाइक देयर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ डिफरेंट बेकरीज ऑल अक्रॉस द सिटी. सिमिलरली जब एक कंपनी बहुत अच्छी तरीके से विद इन इट्स ओन होम कंट्री स्टैब्लिश हो जाती है, देन इट्स नेक्स्ट वेंचर बिकम्स कि वो दूसरी कंट्रीज में जाके अपनी ब्रांच खोले. आर यू गेटिंग इट? और उसका रीजन क्या होता है? ताकि उसको वर्ल्ड मार्केट को एक्सेस कर सके, उसको वहां पे चीप लेबर मिल सके, लोग मिल सके काम करने के लिए, चीप प्रोडक्शन कॉस्ट. ऑब्वियसली बात है वो किसी डेवलपिंग कंट्री में जाएगा या कोई भी कंट्री किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी ब्रांच खोलेगी तो वहां पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो चीप होगी. सो इट कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, right? The headquarters of the company remain its in original country, usually one of the most developed countries in the world, such as UK and USA. They then have factories throughout the world, which either make parts or entire finished products for the company to sell on the world market. So, my dear learners, you all need to understand that that is the main reason for the globalization, that they made their headquarters in one country and it made its branches all across the world so that it could have maximum profit or it can avail all the benefits of its international exposure. Okay, now over here you need to understand कि आपने लाजमी तौर पे either it's your 6 mark question, either it's your 8 mark question. You need to write the examples of multinational companies like Ford, like Toyota, Nissan, all right, like Caltex, Coca-Cola, IBM, Sony. All of these are multinational companies which are located all across the world. All right. So they bring obviously with a lot of advantages for the country which is opening its branch in another part of the world. But these multinational companies also affect the host countries. Like for example, अगर कुछ companies पाकिस्तान में open हुई हुई हैं, so you need to understand basically bete that what are the advantages and what are the disadvantages of this. Okay, so let's start with advantage number 1, investment. The companies bring much needed money into the country. The most important benefit is कि through globalization, जो countries हैं basically बेटे, they get a lot of money, they get a lot of profit. But unfortunately ये सारा profit उस country को जाते जो अपनी branch किसी और country में open करती है. Are you getting my point? Like actually the main benefit, the main profit is actually being provided to the host country. Not to the host country, sorry, the country
which is opening its branch in another country. Now, what are the disadvantages? The wages paid to the local workers are often low, and some companies have been accused of exploiting the local workforce rather than benefiting it. यानी देखा ये गया है कि ज्यादातर ये कंपनीज क्या करती है, अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, यानी उनके लोकल लोगों से ज्यादा काम लेती हैं और उनको फायदा कम पहुंचाती हैं. There are often tax incentives for these companies to locate in countries in the developing world. This added to the fact that they take most of their profits out of the country means that the actual economic benefit to the country will be minimal. It means जो actual benefit है वो उनको खुद को होता है, वो host country को ज्यादा benefit नहीं पहुंचाती. Similarly, my dear learners, the second advantage is technology. जब किसी और मुल्क की कंपनी हमारे मुल्क में खुलेगी तो ऑब्वियसली वी विल गेव मोर एक्सपोजर टू द टेक्नोलॉजी, हमें उनकी टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा, राइट? देखो, हर मुल्क में काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता, एक अलग होता है, राइट? So if their companies will open their branches in our country, so we will have an exposure of those companies. We can learn their strategies, we can learn their technology, and eventually we can impact our own industries as well. So the companies help the development of the country by bringing in technology and knowledge that the host country does not possess. But unfortunately, there is a disadvantage. Most of the countries, they are actually reluctant to transfer their technology. Are you getting my point? यानी वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देते या वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सिखाते. ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वजह से जो होस्ट कंट्री है उसको ज्यादा एडवांटेज नहीं होता. Unless the company actively participates in a program to educate local companies in the new technologies, the country's industry will not really benefit. Multinational companies might be worried by sharing too much information, as they could find themselves in increased competition from local companies. It means that most of the industries, they are not going to tell the technology, or they are not ready to transfer their technology and information to the other countries where they're opening their branches. Moreover, there is an advantage related to transport, that when the new companies are open, they are taking care of all the infrastructure facilities. They are making sure कि वहाँ पे transport proper है, वहाँ पे internet proper है, वहाँ पर आपके पास जो है proper workforce आपके पास available है, right? लेकिन इसका disadvantage ये भी होता है बेटा, that the transport link is limited. Only where that industry is present, transport links are available. But लेकिन बहुत सारे areas में ये transport link available नहीं होते. Now, the most important advantage of this globalization, my dear Lana, is job, right? Actually, these companies open job opportunities for the local population with very good packages, right? But the disadvantages is that often the jobs are highly skilled, so the company brings in their own people with them. ज्यादातर ये जो कंपनीज अपनी ब्रांचेस ओपन करती हैं तो ये अपने लोगों को अपने साथ लेकर आती हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल नेचर की वजह से, right? Moreover, basically, my dear learners, now there are advantages for the growth pole as well, that multinational companies act as a growth pole for other similar companies. They could encourage more companies to locate in their country when they see the benefit that it brings, right? एक कंपनी है, उसको देखकर दूसरी कंपनी आती है. Like for example, in history we talk about कि बेटे जब पहली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, that was of Portugal. उसको देखा देखी और कंपनीज भी आने लगी, लाइक डच भी आ गए, फिर आपके पास फ्रेंच भी आ गए, फिर ब्रिटिश भी आ गए. ब्रिटिश तो ऐसे आए कि वहां पर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया और 200 इयर्स तक वो वहां पर रहे. आर यू गेटिंग इट? तो ग्रोथ पोल्स तो होते ही होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो होस्ट कंट्री होती है वो एक्सप्लॉइट बहुत होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय डियर लर्नर्स, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि जो आने वाली कंट्री होती है, इट इज लीस्ट बॉदर्ड कि वो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से या कोई और चीज हो रही है. So this is a topic for today, my dear learners. When you are going to watch my video, kindly go through it. If you find any difficulty in understanding this topic, so please do let me know. There are 6-mark questions and 8-mark questions which you have to do related to this topic. Take care of yourself. Keep working hard. My prayers are with you all. Khuda Hafiz, everybody.